Good morning to one and all, class 11th. Today we'll start the third part of our video. You can say the third video of this chapter number 3, Discovering Tut the Saga continues. So before starting with this new paragraph, students, I would like to tell you about the previous one, that when like a British archaeologist who discovered Tut's tomb in 1922, and the contents of tombs were complete and formed the richest royal collection ever found. And after that, what was going on, that they remove that mummy from adornments, they removed its head and like separated every major joint, and they resemble that Tut remains reassemble that Tut remains on a layer of sand in a wooden box and put padding on them to hide the damages. So after that, today we'll start our paragraph from here. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter discovery, an anatomy professor x-rayed a mummy and revealed a startling fact: beneath risen that cakes his chest, his breastbones, and front ribs are missing. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create three-dimensional virtual body. What more could a CT scan can reveal of Tut than X-ray? And it could answer two of biggest questions still lingering about him: how did he die and how old was he at the time of his death? King Tut's demise was a big event, and even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. So, here, students, in these paragraphs, let's read what was there. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. So, here, the writer A.R. Williams, he explains that with the passage of time, how the science has changed, and how the archaeology department focusing on the new things, and how focusing less on treasure and more on fascinating details of life. Because on previously, those archaeological department, they focus on what the treasures, that what we have found from the like mining and all these things, or after that archaeology. But nowadays people are more focusing on the details of life and intriguing mysteries of death, and what mysteries are going on, or like you can say that इंटरव्यूइंग मीन्स कुछ जटिल ऐसे जो मिस्ट्रीज़ हैं डेथ की, जो रहस्य हैं डेथ के, वो पता करने की कोशिश करता है अब. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, एंड नाउ डेज आर्कोलॉजिस्ट यूज सम मोर sophisticated and more advanced tools, you can say that. So including medical technology. And in 1968, more than 40 years after Carter discovery, जब कार्टर ने टट की मम्मी को 1922 में डिस्कवर किया, आफ्टर दैट व्हाट कार्टर ने क्या किया कि टट की मम्मी को कुछ जो भी पार्ट्स डैमेज हो गए थे या टूट गए थे, उन्होंने उसको पैडेड वुडन उसमें रखा और उन्होंने उसको वापस सील कर दिया. So after 40 years of his discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy. एक anatomy के professor ने मम्मी का x-ray किया and revealed a startling fact. और कुछ ऐसे startling facts को हमारे सामने लाया. Beneath the reason that kicks his chest, his breastbone and front ribs are missing. That some of the body parts like chest bone, front ribs, those are missing part of Tut's body. So today diagnostic imaging can be done with computed tomography. आज हम CT scans कर सकते हैं, by which hundred of X-rays and cross section are put together like slices of bread to create
थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी एक्सरेज, और उसके थ्रू थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी एक्सरेज और बॉडी को एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की तरह ट्रीट करके उसके साथ कहीं से भी उसकी किसी भी पार्ट के बारे में हम एक्सरे ले सकते हैं. व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे. एक्सरे के अलावा ऐसा क्या था जो टट की बॉडी में सिटी स्कैन ने रिवील किया, एंड इट कुड आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और कुछ ऐसे दो बिगेस्ट क्वेश्चंस जो अब भी लोगों के माइंड में चल रहे थे. हाउ डिड ही डाई. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ही डाई, एंड द सेकेंड वन इज हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ. सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब भी जानने बाकी थे. किंग टच डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड. और किंग टच का जो ये डिमाइज था वॉज बहुत बिग इवेंट था रॉयल स्टैंडर्ड्स के लिए. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन बिकॉज ही वॉज द लास्ट फ्रॉम हिज क्लैन, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ rattle of his dynasty. और उसका जो funeral था that is a very big thing, or you can say that very big event, very big you can say बहुत बड़ी बात थी उसकी डायनेसिटी के लिए कि किस तरह जो टट है वो मरा था या क्या हुआ था. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज passing away and its aftermath are unclear. बट जो कुछ भी टट की बॉडी के साथ मिला था those particulars are still they are like an unclear situation. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18 dynasty golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history. Now here in this paragraph, Amenhotep III. So Imhotep III is talking about that father or grandfather जो थे वो pharaoh who ruled for almost 4 decades, जिन्होंने 4 decades के लिए रूल करा. और कब किया, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इनकी डायनेस्टी की, 18th सेंचुरी में. हिज सन एमोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उसके बेटे ने उसकी जगह राजगद्दी ली, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इजिप्ट. और उसके बाद उन्होंने एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में इनिशिएट किया. द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथन द सन डिस्क. जो नए फ़रो या जो नए व्हाट इज जो नए फ़रो आए थे वो इज़ लाइक द रूरल इन एंशियंट इजिप्ट. सो द फ़रो इज़ वॉट द रूरल इन एंशियंट इजिप्ट. उन्होंने नई वर्शिप को प्रमोट किया लाइक एटन द सन डिस्क. चेंज हिज नेम दैट अखेनातेन और सर्वेंट ऑफ एथन and moved the religious capital from old city of Thebes to new city of Akhetaten, known now as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago Research Center in Luxor. The site of ancient Thebes family had the family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. So here द न्यू फ़रो जो आए थे ही उसने किसकी वर्शिप पे ज़्यादा फोकस किया, सन डिस्क, और ख़ुद का नाम बदल के सर्वेंट ऑफ एथन या अखनातेन रख लिया, एंड रिलीजियस कैपिटल को थेब्स से हटाकर अमरना कर लिया, एंड ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून. और फिर उसने अपने पूरे देश को शॉक में डाल दिया जब उसने अमून जो कि एक मेजर गॉड थे उनकी इमेजेस या उनके टेम्पल्स को बंद कर दिया और सबको डैमेज कर दिया. इट मस्ट हैव अ हॉरिफिक टाइम. ये वक्त बहुत ज़्यादा ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा. सेड रे जॉनसन, ऐसा रे जॉनसन ने कहा है कि जब उसने ऐसा किया होगा तो दिस टाइम वॉज लाइक द हॉरिफिक टाइम फॉर देयर country. So who is Ray Johnson? He is the director of Chicago Research Center in Luxor. The site ancient Thebes and the family that had ruled for century was coming to an end. और इस तरह ऐसी फैमिली जिसने सेंचुरीज तक रूल किया था उनका एंड आ गया था. एंड देन
Akhenaten went a little wakey, and after that he becomes wakey. Students will continue the next remaining chapter in our next video. Till then, stay safe. Thank you all.